How are you friends? In lecture number 15, I welcome you all. Let's start our today's session, that is lecture number 15. Nucleophilic substitution reaction of halogen. See, understand the topic first of all. If you will understand the topic, then after all the concept will be very clear. Nucleophilic substitution reaction of halogen means you will be given with halogen and one nucleophile. You have to add this nucleophile in this halogen. This is our topic. But first thing, halogen will not give nucleophilic substitution reaction in normal condition. It will not give nucleophilic substitution reaction in normal condition. In normal condition, it will not give a nucleophilic substitution reaction. So the question is, why? Why not give nucleophilic substitution reaction in normal condition? At extreme condition, it is possible to substitute the nucleophile into the halogen, but at a normal situation, it is not possible. So let's find out the reason. What are the main reasons why it is not possible? Nucleophilic substitution reaction for halogen at the normal situation. Reason number 1. Due to resonance. Reason number 1, due to resonance. So let's check this reason. This is a chlorobenzene. Cl having a 3 lone pair. Now see what will happen. Suppose chlorine will put this lone pair. So resonance starts. You can check one thing, my dear friends, how resonance take place. See, check faster and please draw all the resonance structure with me only. You can check how these bonds are rotating in a ring. Clear? You don't need to put the rocket science here, just apply the logic. How the resonance are taking place. Position of double bond is changing alternately. So due to this resonance, my dear friends, due to this resonance, chlorine and carbon both will have in a double bond character. And due to this double bond character, nucleophile cannot be attached easily. To attach nucleophile, what you need? You need electropositive centers. Whether there is any electropositive centers available? Not at all. So availability of electropositive center in a ring is not there. So as a result, what happened? As a result, due to the resonance, negative charge is induced in a ring. So nucleophile, reason 2, nucleophile fails
more repulsion with ring due to presence of electron density in a ring. When nucleophile tries to attack from every point, what it will the highest repulsion, so as a result, it will not make attack. Clear? Third reason number 3. Reason number 3. CX bond. Hybridization of carbon. In a haloalkane, this carbon is under the sp3 hybridization. While in a haloarine, carbon is under the sp2 hybridization. Here the S character is higher. If S character is higher, electronegativity will be higher. As a result, bond will be more attracted towards the carbon. As a result, bond length is decreased. This bond length is nearly 169 picometer and this is nearly 177 picometer. Due to less bond length, it's difficult to break. As a result, you cannot separate the Cl in a formation of Cl minus. मतलब के बच्चों में समझाना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को कि यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये वाला कार्बन sp2 में है बच्चों। मतलब ये वाला जो कार्बन है ना, वो कार्बन उतने आसानी से इसे नहीं जाने देगा जितने आसानी से CH3Cl में चला जाता है। यहाँ से Cl माइनस रिलीज होना आसान है, पर यहाँ पर उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी उतना वो बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है। जब तक ये Cl पॉजिटिव में नहीं रिलीज होगा ना बच्चों, सॉरी Cl जब तक नेगेटिव में नहीं रिलीज होगा, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, कैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब हैशटैग लगाओ, सबसे बढ़िया नोट, SN1 is not possible. In any case, in haloarine, please make a note. SN1 is not possible. SN1 is not possible. Clear? In any case, क्योंकि यहाँ पर बच्चों कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और चौथा और आखिरी रीजन, रीजन 4, स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। इज वेरी लेस। जो फिनाइल कैटायन मान लीजिए बन भी गया तो उसका स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। फिनाइल कैटायन किसे बोलते हैं? अगर क्लोरीन रिलीज हो जाए फिनाइल कैटायन, लेट मी शो यू। अगर क्लोरीन रिलीज हो जाए माइनस के फॉर्मेट में तो इसे बोलेंगे फिनाइल कैटायन। इसका स्टेबिलिटी बहुत कम है बच्चों। दैट इज द मेन रीजन व्हाई this phenyl cation cannot be formed and why SN1 is not possible, because in SN1 carbocation stability matters. Here carbocation is not possible, so SN1 is ruled out. Clear? So SN2 is possible in some cases. What we have done, our topic is nucleophilic substitution reaction of haloarine, but first of all you learn that why haloarine is not capable to give the nucleophilic substitution reaction. We list out the 4 points. In a normal situation, due to resonance, due to nucleophilic repulsion, due to CH hybridization, and due to stability of phenyl cation. Now we will learn at extreme situation
how this reaction is possible. At extreme situation, how you can add nucleophile into the ring. That we are going to learn in the second portion. So first of all, please take us. Let's start the next portion. In the previous section, we have checked that why haloarine cannot give nucleophilic substitution reaction. In this portion, how it is possible that haloarine can also give nucleophilic substitution reaction. Which are that condition? In that condition, that nucleophilic substitution reaction in haloarine is possible. So let's check out that condition at extreme temperature and extreme pressure. Nucleophilic substitution reaction is possible. So let's learn that. Clear? First I will take the chlorobenzene. Chlorobenzene reaction with aqueous NaOH. Clear? At 300 atm pressure and 663 Kelvin temperature. At 623 Kelvin temperature, 300 atm pressure, it's followed by H plus. Initially what happened? Intermediate. Let me show you that intermediate. This is known as a sodium phenoxide. Now it's followed by H plus, or known as the hydrolysis. So formation of phenol take place. Formation of phenol take place. Is this clear, my dear friends? So at an extreme temperature, 623 Kelvin, and at extreme pressure, this reaction, addition of nucleophile. Now we have nucleophile 2H minus. This is worked as a nucleophile. So addition of nucleophile in this haloarine by the substitution of chlorine is possible via this mechanism. Clear? Now you want to reduce this temperature. You want to reduce this temperature. So what you have to do? You have faced the problem in a previous section that haloarines are electron rich. So what you have to do? You have to attach something that can withdraw the electron density. So here I am going to attach nitro group. One nitro group is attached. Now let's check what happened. So now temperature is reduced. 400. Temperature is reduced nearly 443. 443 Kelvin. Clear? By same procedure. First is NaOH, followed by hydrolysis. So that is the formation of nitrophenol. That is the formation of nitrophenols. Let's start the third reaction. I want to decrease temperature. Clear? Reaction temperature that I want to decrease. So now I will attach one more nitro group at the ortho position. And now let's check what happened. One nitro at the para position, one nitro at the ortho position. Chlorine is here. NaOH aqueous. H plus. As you are entering the electron withdrawing group, electron density from the ring haloarine is decreased. As a result, nucleophile feel the less repulsion and it can attack more easily. Here the temperature is 368 Kelvin temperature. Clear? So that is the formation of phenol.
Now last and the most important reaction. This is named as a 2,4,6 trinitrophenol, also known as the picric acid. In this case, there is a 3 electron withdrawing group. They work as a electron withdrawing group. Here there is a 3 electron withdrawing group. So from the haloarine, electron density is almost very less. So upcoming nucleophile can attack very easily. And here in this case, you don't need to provide a heat. Only by providing a heat from the body or only warm, this reaction will be carried out. Is this clear? समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? तो आपने क्या सीखा आज आपने सीखा कि हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं देते। क्यों नहीं देते? वहां पर 4 रीजन था। पहला रीजन क्या था? कि रीजन था रेजोनेंस इफेक्ट। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट क्लोरीन इज इन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा था हेलोएरिन का जो रिंग रहता है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के बीच में रिपल्जन होने वाला है। तीसरा आपने क्या सीखा? तीसरा सीखा था आपने फिनाइल कैटायन का स्टेबिलिटी बहुत कम है। चौथा था कार्बन हेलो अल्केन में जो रहता है वो sp3 में है और जो हेलोएरिन में है वो sp2 में है, मतलब के बॉन्ड लेंथ कम होगा sp2 का sp3 की कंपैरिजन। क्लियर? नॉर्मल सिचुएशन में रिएक्शन पॉसिबल नहीं था, पर आपने जब एक्सट्रीम सिचुएशन दे दी है, मतलब 623 केल्विन टेंपरेचर और 300 atm प्रेशर दे दिया, तो रिएक्शन पॉसिबल हुआ और रिएक्शन ऐसे कैरी होके फिनॉल मिला। पर मान लीजिए कि आपको ये रिएक्शन टेंपरेचर कम करना है, तो आपको हेलोएरिन के रिंग में से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया? आपने नाइट्रो पैरा पे लगाया, बाद में एक ऑर्थो पैरा पे लगाया, बाद में 2 ऑर्थो पैरा पे लगाया। अगर आपने नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पर लगाया तो टेम्परेचर में कोई कटौती नहीं होगी। उसका रीजन है बच्चों कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आती है। आप लेक्चर का बिगिनिंग निकाल के देखो, क्लोरोबेंजीन वाला जो रेजोनेंस बनाया है वहां पर देखो, मेटा पोजीशन किसे बोलते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नहीं आता है तो वहां पर नाइट्रो लगाने का कोई मतलब है ही नहीं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लगाया तो टेम्परेचर इतना ही रहेगा, सिचुएशन यही रहेगी। समझ में आ गया? तो आज के साथ यही लेक्चर नंबर 15 यहीं पर खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, और उसके बाद एक और लेक्चर जहां पर हम पढ़ाई करने वाले हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। बस उसके बाद आपका हेलोएरिन वाला हेलोआल्केन हेलोएरिन वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।